Assalamu alaikum, everyone. So let's start. This is the last paper one that we're doing in this session. I hope this helps those of you who are here and those of you who watch it later. Now, before we start, just a reminder that you have a lot of other helpful content in the description below as well. I've uploaded a number of quick revision videos that a lot of students find helpful before their exams. Have a look at that. There's a 23-minute paper one checklist that you should definitely go through because that will help you figure out whether you've covered every single concept that you need to or not. और फिर अगर आपको कोई specific topic जरा जल्दी से revise करना है, you'll find that in the quick revision videos. The link for that playlist is in the description below. Also, I've solved all the paper ones from all the P1s from March 2021 to March 2023. अगर आप अपनी practice आप करते हुए कोई question है, कोई भी जो आपको नहीं समझ आ रहा, you can have a look at that as well. Also, if there's any particular concept that you're finding trouble understanding, आप नीचे देखेंगे P1 का पूरा एक course uploaded है in the description, crash course. जिसमें आपको कोई भी particular concept अगर देखना है, for example, maybe domain and range of composite functions, function transformations, differentiation, integration, volume of revolution, whatever, you have those detailed videos there as well. You can have a look at that if you need to for any particular topic. Okay, so let's start with this then. So I'm only going to be doing the relatively more difficult questions from this paper. I'm not going to complete this, do the whole paper. We will be skipping the parts or questions that are relatively straightforward. Okay. Walaikum assalam, Ahmed. And you can also let me know if you have any questions while we do it. I'll try to keep responding regularly as well. Okay, so let's start with this one. This is October-November 2022, paper 1-1. Let's have a look at this. The first part says we have to solve this equation. Now, that's pretty straightforward. You multiply करेंगे fraction of side पे quadratic equation बन जाएगी, उसको solve कर लेंगे. So you can do that. Look at the next question. You have the equation of a curve that is such that the derivative of the curve is this. It's given that the curve passes through this point. Find the equation of the tangent to the curve at P. This is the point P. Tangent की equation कैसे आती है? आपको gradient चाहिए होता है, एक point चाहिए होता है. Point आपको पता है. Gradient कैसे आएगा? आप 6 इसमें input कर देंगे, gradient आ जाएगा, आप equation लिख देंगे. That's pretty straightforward as well. Equation of curve निकालनी है. इसको integrate करेंगे. Plus C आ रहा होगा. वो find करने के लिए you will input this point there and you can find the value of C from that. Okay, so this is also pretty straightforward. You can do that. Let's move on to the next one. Have a look at this one. Okay, so a curve has equation ax raised to the power of 1/2 minus 2x, where x is greater than 0 and a is a constant. The curve has a stationary point at the point B, which has x coordinate 9. We need to find the y coordinate of the point B. Now, let's have a look at this. Okay, now the equation is y equals ax raised to the power of 1/2 minus 2x. The domain for that equation is given. That's x greater than 0. ठीक है. The curve has a stationary point at the point B. तो stationary point का हमें y coordinate निकालना है. उसने उसका x coordinate दे दिया है. Stationary point का x coordinate उसने बता दिया. Now, how do you find stationary point? You find the derivative, put that derivative equal to 0, right? So let's do that. Let's find the derivative of this first of all. dy over dx. Let's see what that turns out to be. 1/2 gets here, gets multiplied. We have a as it is. A is a constant, right? X की power में से 1 minus कर देंगे. It becomes minus 1/2. Minus 2x का derivative, that's just minus 2. ठीक है. अच्छा, अब क्या आएगा? आप जब डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हो तो आपको क्या मिलता है? स्टेशनरी पॉइंट मिलता है. स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता है, that's 9. So what you can do here is you can say let's input x equals 9 and dy over dx equal to 0, because जब डेरिवेटिव 0 होगा वहां पे x की वैल्यू 9 होनी चाहिए. इससे क्या होएगा? आपके पास a आ जाएगा. Okay, let's find that. So we put this equal to 0, half into a into 9 raised to the power minus 1/2 minus 2. Okay, now 9 raised to the power minus 1/2, that's actually 1/3 that goes to the denominator, and it's going to become 1/6a minus 2.
2 goes to the other side. And you have a equal to 6 into 2, which is going to be 12. So we have the value for a from this. A ke value aa gayi. So now we know what the curve is. The curve is going to be y equals a, which is 12 now, into x raised to power 1 over 2 minus 2x, right? This is the equation of the curve now. Once you know the value for a, आपको x coordinate पता है एक point का, उसका y coordinate निकालना है. All you have to do is just put x equals 9 here, and that will give you the corresponding y coordinate. Let's do that. ये values input करके आपको दिखानी होंगी. So 12 into 9 whole raised to power 1 over 2 minus 2 into 9. You can evaluate this on your calculator now and see what that turns out to be. 12 into 3 is 36. 36 minus 18, that should be 18. So the y value turns out to be 18. That is what we were looking for. This is the y coordinate of the point P. Okay, that was pretty straightforward as well. It's not that difficult. Okay, so let's move on. Question number 4. Okay, now this is about binomial. You have the coefficient of x squared in this expansion. And they say this coefficient of x squared is equal to 70. All you have to do is find the coefficient of x squared from this, find the coefficient of x squared from this, add both of them together. जो कोएफिशिएंट आपके पास आ रहा होगा उनको ऐड करके उसको 70 से इक्वेट कर देंगे, एक इक्वेशन बनेगी p के टर्म्स में, उसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, you can all do that. I don't think it's very difficult. You can try this. You should be able to do it. So again, as I said, I'm going to focus on the questions that are more difficult. Okay, so this is doable. You can do this. Let's move on to question number 5. The diagram shows a sector OAB of a circle with center O. The arc length is given. It's given that the perimeter of the sector is 20 centimeters. Okay, find the perimeter of the shaded segment. So the information that we're given is that the length of the arc is 8 centimeters. The perimeter of the sector is 20 centimeters. So if this arc length is 8, and we know that the whole perimeter is what? It's 20 centimeters. So radius कैसे आ सकता है? Sector का perimeter क्या होएगा? 2r plus 8. That is supposed to be 20. 2r equals 12, and the radius turns out to be 6 from this. So ये sides कितनी है? 6 है. 20 में से 8 minus किया, उसको 2 से divide कर दिया essentially, right? So the sides are 6. You know the radius. How do you find the perimeter of the shaded segment? You have to find these two lengths, right? One length here and the other this arc length. Arc length आपको पहले पता है 8 है. आपको सिर्फ ये वाली length चाहिए, AB length. Now, how do you figure that out? In this sector, you only know, so you only know the radius and the arc length. Angle नहीं पता, वो side find करने के लिए आपको angle चाहिए होगा, ठीक है? So how do you find the angle? Let's call this angle theta. How do you find this angle theta? We know the arc length, right? Arc length आपको पता है? Arc length का formula use कर सकते हैं. Okay, arc length का formula use कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा? Arc AB is equal to 8. R into theta is 8. We know the radius, that is 6. So 6 theta equals 8. Theta की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3. Okay, theta आ गया 4/3. अब आपको साइड AB फाइंड कर सकते हैं. AB साइड फाइंड कर लेंगे तो बस उसमें ऐड कर लें, 8 ऐड कर लें, right? I think this is also pretty doable. चलिए जल्दी से कर लेते हैं. अगर हम इसका पूरा एंगल थीटा है, what we can do is we can break this angle down to 2 parts and make this right angle triangle. This is one way of doing this. आप cosine rule भी use कर सकते हैं. That's also fine. But this is much simpler. अगर आप isosceles triangle के दरम्यान से इस तरह से break कर लें तो ये right angle बनता है. And this angle is going to be divided into half. If this angle is 4/3, so यहाँ पे क्या? Yeah, this angle is 4/3. तो जो half angle होएगा वो कितना होएगा? 2/3. This angle is 2/3 and this angle is also 2/3. ठीक है, अब इस एंगल को यूज करके, साइड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ये अगर इस पॉइंट को x नाम दे दें, हम xb फाइंड कर सकते हैं. हाउ डू यू फाइंड दैट? xb is perpendicular, 6 is the hypotenuse. Perpendicular hypotenuse में कौन सी रेशो होती है? Sine. So we can say sine of 2/3. Remember, your calculator is supposed to be in radians, right? So ये आपके पास क्या आ जाएगा? Sine of 2/3, that is supposed to be perpendicular, which is xb divided by the hypotenuse, that's 6. यहाँ से आप xb की वैल्यू पहले ऐड कर लें.
Let's see what this turns out to be. Your calculator should be in radian mode. Keep that in mind. 6 into sine of 2 divided by 3. That's giving me 3.71. 3.710. Okay, x भी लेंथ आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, a भी आ जाएगा, पूरी लेंथ आ जाएगी. 2 into this number, what does that give us? 7.42. All right, this is the other length that we have. Perimeter क्या हो जाएगा फिर? इसमें ऐड कर दें arc length 7.42 plus the arc length 8, and that gives us 15.42, and that's what we were looking for here. Okay, I hope that makes sense. So yeah, that's not that difficult, right? So you're right. Find the area of the shaded segment. ये आप कर लें. Segment के area कैसे आता है? Sector के area में से triangle के area minus कर दें. ठीक है, अब आप कर लेंगे. So आप ये formula use कर लें, half r square into theta minus sine theta. ठीक है. Second part is easy. You can do that. I'm going to move on to question number 6 now. Do we mind see Acha, yeah. When you are finding volume of revolution about y-axis, you don't think about upper or lower there. आप बस क्या करें, जो भी दो ग्राफ्स है ना, उन दोनों ग्राफ्स का वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन आप फाइंड कर लें with the y-axis. Whatever is the bigger number, you subtract from that the smaller number. ठीक है? So you don't need to think about upper or lower in that case. Volume जो भी जिस भी कर्व का x y-axis के साथ जो है वो बड़ा आ रहा है, उसमें से माइनस कर दें छोटा वाला. ठीक है, दोनों को अलग अलग इवैल्यूएट कर लें और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दें. ठीक है. Well, the most important example is don't get stuck at any one question. उस point पर नहीं समझ आता, it's okay, it's all right. Threshold will take care of that. You can move on to the next one and come back to that later. If you get stuck at a question, उसमें आप 10 मिनट गुजार देंगे तो फिर आप पैनिक होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपके बाकी पेपर्स हो सकता है कि आसान क्वेश्चंस रह जाएं. So don't think कि आप हर चीज आपको पहली दफा ही फिगर आउट हो जानी चाहिए. It's okay if you can't figure something out. अब 2-3 मिनट में आपको समझ नहीं आ रही, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, you move on, okay, and come back to that question at the end of the paper. Otherwise फिर आसान पेपर भी मुश्किल बन जाता है because आप फिर पैनिक होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. And the other thing is, if you are not able to do one part, you do not leave the second part as well. अक्सर second part आप फिर भी कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जब आपके पास लाइन दो ग्राफ्स के दरमियान में एरिया आ रहा होता है ना, उसको आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन. दो ग्राफ्स के दरमियान में एरिया आ रहा है तो आपने उन दोनों ग्राफ्स को अलग अलग करना है, उनको सबट्रैक्ट करना है. अब उसमें एक लाइन भी हो सकती है, राइट? जब लाइन होगी कोई तो उसमें आपको लाइन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वो लाइन और कर्व में कोई डिफरेंस उसमें आज सच नहीं होगा, सेम मेथड अप्लाई होगा. बस आपको लाइन की इक्वेशन खुद से लिखनी होगी. आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो y इक्वल्स अ कांस्टेंट की फॉर्म में होती है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन इस फॉर्म में होती है और वर्टिकल लाइन इस फॉर्म में होती है, x इक्वल समथिंग, और फिर बाकी प्रोसेस तो वही रहेगा, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है. ठीक है. Yeah, same goes for the x-axis. वहाँ पे हम normally upper minus lower कर लेते हैं because that's how it almost always works. In fact, that's how it works every single time. But आप ये भी use कर सकते हैं, whatever result is turning out to be bigger, उसमें से आप minus कर दें whatever is the smaller number. ठीक है? So that's okay. That will work as long as your working is correct. Asymptote वाली range जहाँ पे reciprocal functions आते हैं, that's a good question. इस पे आपको ना यहाँ पे look at the description below. Paper 1 की जो आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही है ना, उसमें आप देखें रेसिप्रोकल फंक्शंस की रेंज वाली एक वीडियो होगी. फंक्शंस वाली वीडियोस के अंदर ना रेसिप्रोकल फंक्शंस वाली रेंज वाला टाइटल होएगा. उनकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, हैव अ लुक एट दैट. you'll understand from there. You'll have to spend about 10-15 minutes on that and you'll understand that. Okay. अच्छा, मई जून 2022 में किसी में है तो वो पेपर मैंने सॉल्व किया होगा, वो आपको उसमें मिल जाएगा.
ईयरली पास्ट पेपर्स वाली प्लेलिस्ट में देखें, वो आपको वो पेपर मिल जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। अच्छा, let's do this. Question number 6, part A. Show that this equation may be expressed in the form a sine square theta plus b sine theta plus c equals 0, where a, b, and c are constants to be found. Okay, so we have to convert everything to something in terms of sine, right? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लें। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, in the denominator you see this is a plus b into a minus b, right? So you can write the denominator as sine square theta minus cos square theta, right? A plus b into a minus b दोनों multiply होंगे तो वो a square minus b square बन जाएगा। Now what about the numerator? Numerator में this thing gets multiplied here, this thing gets multiplied here. So what do you get? You have sine theta minus cos theta, and you add to that sine theta plus cos theta. Okay, okay, sorry, what happened here? Okay, sine theta plus cos theta. On the other side, you have 1. अब क्या करें, इसको simplify करें, numerator simplify करेंगे, minus cos theta and plus cos theta, they're going to get cancelled. And you are going to be left with 2 sine theta in the numerator. From the denominator, multiply this to the other side. And that gives you sine square theta minus cos square theta on the other side. Okay, अब आपको क्या करना है, you want everything to be in terms of sine. तो आप cos square को sine square में convert कर लें. So it becomes 2 sine theta minus equal to sine square theta minus 1 minus sine square theta. And that gives you 2 sine theta equal to sine square theta minus sine square theta. That is going to become sine square theta plus sine square theta. And that's 2 sine square theta. Okay, then you have minus 1, take everything to one side, and you would get 2 sine square theta minus 2 sine theta minus 1 equals 0. And that's what you had to do in the first part. You have converted the equation to the form that was required. Okay, yeah, आपने कर लिया first part. Acha, let's move on to the next one. Next part says, hence solve this equation. Now that's pretty straightforward. But चले हमने इतना कर लिया, let's do this. यहाँ पे लिखते हैं 2 sine square theta minus 2 sine theta minus 1 equals 0. This is the equation that we need to solve now. We can use a substitution. Sine की जगह पे s लग दें या कोई भी और letter use कर लें, that does not make any difference. Let's say u equals sine theta. The equation then becomes 2u squared minus 2u minus 1 equals 0. Can we factorize this? Let's think about this. Factorization यहाँ पे possible नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा? Quadratic formula input करना पड़ेगा. But you remember, you have to input values in the quadratic formula. आप quadratic formula values input करके नहीं दिखाएंगे तो you'll lose marks. Okay, so that's minus b, that's minus into minus 2 plus minus square root of minus 2 whole squared minus 4 into 2 into minus 1 whole divided by 2 into 2. And then you can write down the final answer after this and see what that turns out to be. Let's solve this equation. इसमें आप बेशक अब इसके बाद calculator का function use करके direct values लिखते हैं. That's also okay. And that's what I'm actually going to do here. Calculator में equation solve करने वाला आप use कर लें. So it's a degree 2 polynomial. You have 2, minus 2, and minus 1. The first answer that I'm getting is 1.366. So u equals 1.366. And the other answer is minus 0.366. Okay, now what was the substitution that we did above? The substitution was u equals sine theta. वो substitution यहाँ पे वापस input कर दें. And that gives you sine theta equals 1.366 or sine theta equals minus 0.366. Now remember, this is not possible because sine is between minus 1 and plus 1. Okay? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कहेंगे this is not possible, right? क्योंकि sine तो इस interval में होता ही नहीं है. So this is not possible. दूसरे में क्या करें? Basic angle figure out कर लें. Sin alpha equals 0.366. Let's see what the basic angle turns out to be. Now,
Keep in mind, this is degrees. So if you converted your calculator to radian mode earlier, which you should have, of course, for the circular measure question, you have to convert it back now. This is another important thing you need to keep in mind for tomorrow. Make sure you're looking at the top of your calculator and looking at it for every question के ऊपर आपके पास R लिखा हुआ है या D लिखा हुआ है, ठीक है? So you have to be conscious about that. Otherwise आपके फजूल में मार्क्स यहाँ पे कट रहेंगे अगर आप गलत मोड यूज कर रहे हैं तो. Sine inverse of 0.366. That's giving me 21.469. So that's 47 degrees. That's the basic angle. Now, sine is negative. Sine negative kahan par hota hai? Sine is positive in the first and second quadrants. So it's negative in the third and fourth. Interval is from 0 to 360. एक एंगल आपका यहाँ पर आ रहा होगा, एक एंगल इधर आ रहा होगा. वो आप एंगल्स लिखते हैं दोनों. थीटा इज आइदर इक्वल टू 180 plus 21.47 or it's equal to 360 minus 21.47. Let's see what this turns out to be. It's 201.47. Instruction to anything, you can leave it as it is. 201.47 or 338.53 degrees. These are the two values of theta that we get from this, and these are our final answers. Okay, I hope that makes sense. Yeah, आपकी दो final answers आ गए. ठीक है, Momin, we will be doing October-November 2022 paper 3 after 5th, inshallah. 5th को M1 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम P3s और S1s कर रहे होंगे इंशाल्लाह. ठीक है, अच्छा, let's move on to the next one. Question number 7. So now this is what is this? This is APGP. It looks like that, yeah. So a tool for putting fence posts into the ground is called a post rammer. The distance is in millimeters that the post sinks into the ground on each impact of the post rammer so they follow a geometric progression. The first 3 impacts cause the post to sink into the ground by 50, 40, and 32 respectively. Okay, so you have a GP. The first 3 terms are given. There are 50, 40, and 32. Verify that the 9th impact is the first in which the post sinks less than 10 millimeters into the ground. Now, how do we verify this? You have the first 3 terms, right? First 3 impacts. This is the first one. This is the second one. This is the third one. उसने कहा 9th impact जो है वो first होना चाहिए जिसमें 10 से कम value हो. So what you have to do is you have to figure out the 8th value. 8th value आपको निकालनी पड़ेगी और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 8th value तो 10 से बड़ी है, right? और फिर आपको 9th value निकालनी पड़ेगी to show कि अच्छा 9th value जो है अब ये पहली value है जो 10 से छोटी हो गई है. So you have to find 2 terms here. You have to find the 8th term and also the 9th term. Now, the term formula for a GP is this: AR raised to power n minus 1. What do we know about this GP? We know that the first term is 50, and we know that the ratio is 40 over 50, or we can say 4 over 5, which is 0.8. ठीक है, ये आपकी रेशियो है. अब क्या करें? अब आपको ये बस उसमें इनपुट करना है, 8th टर्म फाइंड करनी है, वो देखना है कि वो क्या आती है. 50 into R, which is 0.8, into n minus 1, which is 7. And you have to find T9 and see what that turns out to be. That's 50 into 0.8 into 9 minus 1, which is 8. Evaluate these two numbers and see what they turn out to be. Okay, 50 into 0.8 whole raised to power 7, and that's giving me 10.5. And 50 into 0.8 raised to power 8, that turns out to be 8.39. तो देखें 8th term जो है वो 10 से बड़ी है और जो 9th term है तो वो 9th term जो है उसमें 10 millimeters से कम जो है वो सिंक करता है. 9th impact पे ये होता है. So this is what we had to prove.
this is the value that you are getting for the 9th impact. ये first value है जो 10 से बड़ी है, पिछली value 10 से छोटी है, पिछली value 10 से बड़ी आ रही थी. This is less than 10. That's what you had to prove in this case. Okay, let's move on. That was part A of this question. Just give me a minute. Just to post something here. This is working. Schedule premiere. 1 minute. And time is 30. All right, let's assume. So part A is this. Let's look at part B now. It says find to the nearest millimeter the total depth of the post in the ground after 20 impacts. Okay. देखें अब क्या हो रहा है. फर्स्ट इम्पैक्ट पे 50 मिलीमीटर्स जो है वो पोस्ट अंदर जाती है. नेक्स्ट पे वो 40 मिलीमीटर्स और अंदर जाती है, राइट. नेक्स्ट पे 32 मिलीमीटर्स और अंदर जाती है. सो नीचे सरफेस हार्ड होता जाएगा ना, तो फिर हर इम्पैक्ट पे वो कम जो है वो अंदर जा रहा है, अब अंदर पोस्ट जा रहा है आपका. ओके, तो उसने कहा है 20 इम्पैक्ट के बाद टोटल डेप्थ कितनी होगी ग्राउंड के अंदर. तो आपको क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स. दैट्स ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉर. व्हाट्स द सम फॉर्मूला फॉर अ जीपी? It's a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. Just input values in that formula. A is 50. R is 0.8. So that's 0.8 raised to power 20 divided by 1 minus 0.8. And just evaluate this number and see what this turns out to be. ये देखते हैं क्या आता है. Sum of the first 20 terms. Okay, so this turns out to be, sorry, just do that again. Okay, this is 247.1 millimeters. उसने क्या कहा है? To the nearest millimeter. It's going to be necessary that you round it off to 247. Otherwise, आपका एक mark हट जाएगा. So you'll write this as 247, and that is what your final answer turns out to be here. Okay, let's move on to the next part. It says find the greatest total depth in the ground which could theoretically be achieved. Okay, what does that mean? आप जो है वो हिट करते जा रहे हो, लेकिन इस जीपी में क्या हो रहा है? आपकी जो एडिशनल सिंक हो रहा है वो पोस्ट, वो कम होता जा रहा है, राइट. अब वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर आप वो करते जाओ हिट, you're actually looking for the sum to infinity of this progression. कि आप ये करते जा रहे हो, eventually वो कब तक जो है, eventually वो ग्राउंड में कितना चला जाएगा मैक्सिमम भी. तो infinity तक आप चलते जाओ तो कितना अंदर जाएगा, right? So what's the formula for sum to infinity? That's what you have to find. In this case, a over 1 minus r. A was 50. R was 0.8. Just input values here. 50 over 0.2, that is going to give you 250, and that is what people are looking for here. Okay, that was not very difficult if you're able to understand the statement correctly. Actual calculation was pretty straightforward here. The main thing was interpreting the question statement and formulating it correctly as a GP. Okay, Acha, that was question number 7. Let's move on. Taha, if you have any particular questions in mind, you can post them here. Once we're done with this paper, we can have a look at them. Okay, question number 8. The function f is defined by f of x equals this for x greater than p over 4. Where p is a constant. Find f dash of x and hence determine whether f is an increasing function, a decreasing function, or neither.
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? ग्रेडियंट जब पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। रिमेंबर, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, वो देखते हैं अभी। या अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फिर वी वुड से दैट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम क्या करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में? वी फर्स्ट हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। उसने ये कहा हुआ है आपको पहले डेरिवेटिव निकालना है। लेट्स फाइंड दैट f dash of x. Before we do that, let's actually write the function in the power form. Denominator को ऊपर ले आते हैं, it becomes 2 minus 3 into 4x minus p whole raised to power minus 1. Now let's find the derivative of this. Derivative of 2 is going to be 0. Derivative of the second term is minus 3 into minus 1 into 4x minus p. The power gets reduced by 1, so minus 1, that's minus 2. And then you have to multiply with the derivative of the part that's inside. P is a constant. 4x का derivative क्या होगा? 4. You multiply by that. And the derivative, therefore, is 12 over 4x minus p whole squared. Now, think about it. 12 is a positive number, right? Both a negative हो नहीं सकता. Denominator has a square. A square can never be negative, right? A square is always positive. और यहाँ पे इस केस के अंदर ये denominator 0 भी नहीं हो सकता, because 0 हो जाएगा तो function वैसे ही undefined हो जाएगा। उसने यहाँ पे domain भी दी हुई है, उसने कहा x is greater than p over 4. That means p over 4 पे वो 0 होता है denominator, अगर आप check करें p over 4 से बड़ी value है। So numerator is always positive, denominator is always positive. Remember, we're saying always positive. आप ये values input करके नहीं check कर सकते, आप वैसे देखेंगे। Numerator is always positive because that's a 12. Denominator is always positive because that's a square. So what can you say about this function? You would say f dash of x, the derivative is always greater than 0. And that means f of x is an increasing function. Okay? F of x is an increasing function. That's what you have to write here. Let's move on. Part B of this. It says express f inverse of x in this form where a, b, c, and d are integers. Okay, now let me write down that function here again. The function was f of x equal to 2 minus 3 over 4x minus p. 3 over 4x minus p. This is what f of x is, right? And we're given the domain for f of x, that is x greater than p over 4. Now, how do you find the inverse of this function? You just apply the standard process for finding inverse, right? आप क्या करोगे? f of x की जगह पे y कर दोगे, ठीक है? And that gives you y equals 2 minus 3 over 4x minus p. And now you have to make x the subject somehow. Now, how can we do that? We could take this term to one side and everything else to the other side. So we could get something like this from that. 3 over 4x minus p, that equals 2 minus y. But now, what do we do after this point? One idea could have been that we take reciprocal, right? इस पूरे function का अगर हम reciprocal ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन पूरे function का reciprocal ले रहे हैं, keep in mind, हम ये नहीं कर सकते कि इसको ऐसे लिखें। So left side पे लिखते हैं, left side क्या हो जाएगी? 4x minus p divided by 3, right? That's what you have on the left side if you take reciprocal. Right side पे आपके पास क्या होएगा? Right side पे आपके पास होगा 1 over 2 minus y. ये नहीं कर सकते कि 1 over 2 अलग से कर दें और 1 over y अलग से कर दें. That would be wrong. Okay, पूरा expression आपने reciprocal लिया. That's one way of thinking about this. If this confuses you, you can also think of it this way. कि आप 4x minus p को उधर ले गए हो, क्योंकि आपको x न्यूमरेटर में चाहिए ना, और आप 3 को इधर नीचे ले गए हो, तो क्या बचा आपके पास? ये आ गया, राइट? और इसी तरह से 2 minus y को आप उठा के यहाँ पे लेफ्ट पे ले आए हो, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में चला गया. So that's 1 over 2 minus 5. That's another way of thinking about this, that you just cross multiply, right? और वो इस फॉर्म में आपने चेंज कर दिया इसको. Now, what do we do after this point? We can multiply 3 on the other side, and that gives us 4x minus p equals 3 over 2 minus y. Right? Remember, we want to make x the subject. अब क्या करें? p को उस साइड पे ले जाए.
उसने क्या फॉर्म मांगी हुई है, p over a, सो कांस्टेंट पहले, तो हम p को पहले लिख देते हैं. We have p plus 3 over 2 minus y. Okay, and then we divide by 4 on the other side. And that gives you p over 4 plus 3 over 4 into 2 minus y. That's going to be 8 minus 4y. Now let's just see, is it that form that was required? b, अच्छा देखें यहाँ पे ये फॉर्म नहीं है अभी आपके पास आई, so you have to be a bit careful. आपको एग्जैक्ट वो फॉर्म चाहिए. वहां पे क्या आ रहा था, p over a, you have something like that here, that's okay, but then you have a minus sign, we have a plus sign, right? और उसने माइनस लिखा हुआ था, हमारे पास प्लस आ रहा है. इसको माइनस करना है किसी तरह से. बाकी सारी फॉर्म आपकी तकरीबन आ गई है. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हम डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या होएगा, we could write it as 3 over minus into 4 by minus 8. Can we do that? We take minus common here, and then this minus could be put in place of this, and you could write this fraction like this then. ठीक है, and now this is the form that we are looking for. अब इसको inverse form में लिख देते हैं. f function का नाम था, so we could say this is f inverse of x. x का x की जगह पे f inverse of x डाल देंगे, right side पे variable change कर दें, and you have p over 4 minus 3 over 4x minus 8, and that is what we were looking for here. This is the inverse of the function f. Okay, that was part B of this. Then part 1 में neither कैसे हो सकता है? Neither ऐसे हो सकता था कि अगर आपके पास for instance ये होता, कोई ऐसी फॉर्म आ जाती है आपके पास, for example 12 over px आ जाता, something like this. Okay, लेकिन वो उसमें यहाँ पे उसने डोमेन दी हुई है, बट कोई ऐसी चीज आ जाती है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है. For instance, if you had 12 into x, अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसमें 12x आ गया लेट्स से, ठीक है, अब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाता 12x लेट्स से, तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है. अगर नेगेटिव वैल्यू इनपुट करेगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. सो वी कांट से इफ दिस फंक्शन इज just increasing or decreasing. It could be both, right? ये किसी part में increasing होगा, किसी part में decreasing होगा, so we would say it's neither of them. Okay, यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, उस केस में हम कहते हैं it's neither. अच्छा, now hence state the value of p for which f inverse of x is equal to f of x. Now how do we think about this? F of x, f inverse of x is identical to f of x. ये आपने बताना है. Okay, so let's have a look at this. Okay, value of p for which this is okay. All right. Remember, f inverse of x और f of x ये identical कब होते हैं? कौन से function का inverse भी वही same function होता है? Can you think of a function like that? Remember, आपके functions y equals x line में reflection होते हैं, function inverse y equals x line में reflection होते हैं. तो y equals x is the only function that you have जिसका inverse भी यही होता है, इसका inverse भी x ही होता है. ठीक है, तो अगर कोई function ऐसा है जिसमें f inverse of x और f of x दोनों ही same है, तो वो कौन सा function होना चाहिए? वो कौन सी equation होनी चाहिए? It should be y equal to x. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इस इनवर्स में इस पूरे को x के इक्वल इनपुट कर दो, राइट? आप कहो कि ये आपके पास y equals x आना चाहिए, या फिर आप ओरिजिनल फंक्शन को देख लो, दैट्स गोइंग टू बी इजियर. आप कह सकते हो कि ये पूरा जो है ये y equals x होना चाहिए. ठीक है, that's one way of looking at this, but there could be a quicker way or a shorter way of doing this. Let me think about it.
f of x में अगर हम f inverse of x input करते हैं तो उसका x result आना चाहिए. That is fine, but okay. Zero पे zero मिलना चाहिए. और अच्छा, let's just try that. वो शायद वो वैसे ही simplify हो जाए. Let's try this. ये हमारे पास function है 2 minus 3 over. ये function था. Let me just write that. f of x equals 2 minus 3 over 4x minus b. ठीक है, this is the function. अब इनवर्स और ओरिजिनल फंक्शन सेम आइडेंटिकल किस फंक्शन के होते हैं सर? y equals x फंक्शन. y equals x फंक्शन जो होता है, इसका ये जो फंक्शन है और इसका जो इनवर्स है, ये दोनों सेम होते हैं. ठीक है, वैसे एक्चुअली सिर्फ इस फंक्शन के नहीं होते, किसी और फंक्शन के भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो सिमेट्रिकल फंक्शन है इस तरह से तो वो भी आपके पास हो सकता है, बट दैट्स अ रेयर फंक्शन. अच्छा, लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस. अगर इसको x से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 minus 3 over 4x minus p, and we multiply by 4x minus p on the other side. That's going to give us 4x square minus px equals 2 into 4x minus p minus 3. Now, what does that give us? That gives us a quadratic equation, and that's not going to be helpful. Okay, so there has to be some other way of doing this. Let me try to figure this out. Value of p for which f inverse of x is identical to f of x. Oh, okay. So it's actually something specific to this question. Yeah, okay. So these are both identical. The f inverse of x आपके पास क्या है? F inverse of x आपके पास आया है p over 4 minus 3 over 4x minus 8. ये आपके पास f inverse आया है. Okay, ये आपके पास f inverse आया है. और f of x आपके पास क्या था? It was 2 minus 3 over 4x minus p. Okay, yeah. The left hand side is the f inverse of x, the right hand side is f of x. They are supposed to be identical to each other. If they are identical to each other, you can compare them and they should, the corresponding term should be equal. So for instance, p over 4 should be the same as 2. And an easier way of figuring out this could be that this 8 should be the same as this p. So p की value पे आपके पास क्या आ गई? P should be equal to 8 here. Okay, I hope that makes sense. So उसने कहा था f inverse of x और f of x दोनों identical है, तो वो exactly same expression होने चाहिए. Identical का मतलब होता है exact same expression, right? अगर वो है तो फिर corresponding terms equal होनी चाहिए. Inverse में 4x minus 8 आ रहा है, यहाँ पे 4x minus p आ रहा है, तो p की value यहाँ पे क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए. All right, okay, let's move on to the next one. Question number 9. Functions f and g are both defined for x for all real numbers. We have to first express f of x in this form and express g of x in this form. This और फिर g of x को इस फॉर्म में करना है. ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वरना शुरू में तो आसान लगे. चलिए लेट्स डू दिस. First part में आपने square complete करना है. What you can do is you can say x square coefficient already 1 है, so you don't have to do anything with that. X square minus 4x, you add 2 squared and you also subtract 2 squared. You have plus 9 outside. These three terms give us a perfect square, and we get x minus 2 whole squared minus 4 plus 9, and the completed square form turns out to be x minus 2 whole squared plus 5. That is what f of x is in completed square form. Okay. Now we have to express g of x in this form as well. Now, how do you convert something to this form? आपने उसी तरह से square complete करना है इसमें भी. सबसे पहले आपने standard method apply करना है, और फिर आपने देखना है कि इस form में कैसे कर सकते हैं. और another idea is इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है? 2 को common लिया हुआ है पूरे function के साथ, तो आप यही कर लें. 2 को common ले लें पूरे function में से. So g of x is
equal to 2x square plus 4x plus 12. What they've done is, this is not the standard completed square form. उसने 2 पूरे में से common लिया हुआ, so that's what you can do. You can say, let's take 2 common from the whole thing. What are we left with inside? X square plus 2x plus 6. 2x के बाद थोड़ी space छोड़ दें. Then you can say, let's add 1 squared here and subtract 1 square. यहाँ से आपका square complete हो जाएगा. And that gives you 2 into x plus 1 whole squared minus 1 plus 6, which is 5. And that's what we were looking for. ये आपके पास ये फॉर्म आ गया. इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. 2 उसने बाहर पूरे में से कॉमन लिया हुआ है, वो वैसे ही रहेगा. ठीक है. अच्छा. Let's move on to the next part. Now it says express g of x in this form where k and h are integers. g of x को आपने f की terms में लिखना है कुछ. How do you do this? You have to think of some transformation of f of x that would convert it to g of x. f of x में कौन सी transformation करेंगे आप, तो वो g of x में convert हो जाएगा. Now remember, उसने यहाँ से first 2 parts में ना आपसे ये square complete करवाया है खुद से. अगर वो ना भी करवाता तो आपको खुद से करना पड़ता है, वरना आपको समझ नहीं आती कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. सो उसने आपको एक तरह से हिंट दिया है कि आपको ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म यूज करनी है. ठीक है. So you have to somehow figure out a way to convert f of x to g of x, right? फिर आप उसको g of x के इक्वल कर सकते हो, right? तो f of x में हम क्या चेंज करेंगे तो वो g of x बन जाएगा. That's what we need to think about. Now what is f of x? f of x is x minus 2 whole squared plus 5, right? And what about g of x? G of x is 2 into x minus 2 whole squared. No, sorry, what am I writing? 2 into x plus 1 whole squared plus 5. Okay, this is what the functions are. अब देखिए, उसने ना आपको ये भी अब एग्जैक्टली बता दिया कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं एक तरह से, बिकॉज बाहर उसने के लगा दिया है, इसका मतलब है एक वर्टिकल स्ट्रेच है, और अंदर उसने क्या किया है, उसने x प्लस एच कर दिया, यानी कि एक ट्रांसलेशन है. सो उसने थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए एक तरह से. तो अब आप देखें कि f ऑफ x अगर ये है तो इसमें क्या चेंज आप करेंगे तो वो ये बन जाएगा. आपको फंक्शन के बाहर पूरे फंक्शन के बाहर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है. So what that means is you are going to have 2 into f of x. ठीक है. ये आपने सिर्फ अभी क्या किया, सिर्फ स्ट्रेच 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा. एक तो ये चीज हो गई. फिर अब आपने सोचना है कि अंदर क्या होगा फंक्शन के. x माइनस 2 था ये पहले, x माइनस 2 को आपने x प्लस 1 बनाना है. तो आप कैसे -2 से +1 पे जा सकते हैं. आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर 3 ऐड करना पड़ेगा, राइट? x माइनस 2 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपको वो मिलेगा. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x के साथ फिर कहोगे this should be x plus 3 like this, and this is what it's going to look like. All right, so you could say g of x is therefore 2 into f of x plus 3. All right. Okay, let's move on. Now it says describe fully the 2 transformations that have been combined to transform the graph of f of x to the graph of g of x. ये कौन सी 2 transformations हो रही हैं? You have to describe those transformations. Now, once you've converted it to this form, this is pretty straightforward. अगर आपके transformations के concepts ठीक हैं, तो this is pretty straightforward. इसमें order भी matter नहीं करता because one is vertical and the other is horizontal. तो order जो मर्जी हो सकता है, right? Because इनका आपस में order नहीं matter करता. तो आप जो मर्जी पहले लिख सकते हैं. तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है? You can say there's a vertical stretch, or you can say there's stretch along y-axis. There is stretch along y-axis with stretch factor what? 2. Okay, by 2 से multiply हो रहा है, तो scale factor, stretch factor इसमें क्या होगा? 2 होगा. That's one thing that is happening. What about the horizontal transformation? The horizontal transformation is a translation. +3 करने से क्या होता है, आपका ग्राफ 3 यूनिट्स लेफ्ट मूव करता है. जब इक्वेशन के अंदर
x की जगह पे आपके पास कुछ x के साथ कुछ प्लस हो रहा हो तो आप लेफ्ट पे जाते हो, माइनस हो तो राइट पे जाते हैं। रिमेंबर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशंस में उल्टा चल रहा होता है सब कुछ, राइट? सो ये ट्रांसलेशन कौन सी है? दिस वाज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे? रिमेंबर ट्रांसलेशन में यू कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, आपको ये वर्ड लिखना है ट्रांसलेशन एज इट इज, एंड यू आल्सो हैव टू राइट डाउन द कॉलम वेक्टर फॉर दैट ट्रांसलेशन। क्या होगा ये? +3 का मतलब है 3 यूनिट्स लेफ्ट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -30। ओके, ट्रांसलेशन वेक्टर में -3 लिखेंगे बिकॉज -3 हियर इन द वेक्टर would mean that you are going 3 units to the left. Okay, and that's pretty straightforward. These were easy 4 marks. Let's move on. Question number 10. We have curves with these two equations, y equals 2x raised to power 1 over 2 plus 1, and y equals half x squared minus x plus 1. They intersect at A and B as shown in the diagram. Find the area of the region between the two curves. Okay, so we need to find this region. Area between two curves कैसे निकालते हैं? एक का एरिया फाइंड कर लें with the x axis और दूसरे का उसमें से माइनस कर दें, so upper minus lower कर देंगे, right? This is the area that we're looking for. Now, do we have the points? Do we have the limits? Yes, one of the limits is 0 and the other is so we have the point B5, the x coordinate therefore is 4 there. ठीक है, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है लिमिट और आपके पास वो रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस। एरिया ऑफ दिस रीजन फाइंड कर लें, अपर कर्व भी है लोअर कर्व भी है, तो आपको ये पार्ट तो आसान है, राइट? जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। रिमेंबर व्हाट द फॉर्मूला इज, ax इंटीग्रल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस। अपर कर्व इज 2x raised to power 1 over 2 plus 1. इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट्स हमने डालनी है from 0 to 4. That's one thing that we have to do. Let's integrate this. 2x power 3 over 2 divided by 3 over 2. Right? Power में 1 ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x. And now you input the limits from 0 to 4. But before that, it's going to be easier if you simplify this. 2 goes to the numerator and it becomes 4x raised to power 3 over 2 divided by 3 plus x. And now you input the limits from 0 to 4. Limits input करके दिखाना जरूरी है. I'm saying that again and again. 4 into 4 raised to power 3 over 2 divided by 3 plus 4. Subtract from this the case when you have 0. 0 के केस में तो 0 ही हो जाएगा, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं इस केस के अंदर, बिकॉज हर टर्म में x आ रहा है तो वो सारे जीरोस हो जाएंगे, आपके पास इवेंचुअल रिजल्ट वो 0 ही होएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें आपके पास क्या आता है। Okay, just put this on a calculator. It's going to be 4 into 8 divided by 3 plus 4. This is giving me 44 over 3. Okay, this is one area that we're getting. Upper curve or x-axis के दरम्यान में। अब lower curve वाला देख लें। What's the other equation? It's half x squared minus x plus 1. इसको integrate करना है from 0 to 4 again. Half x square, इसका इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर में 1 ऐड कर देंगे, it becomes x cube divided by 3, और ये 2 भी आपके पास, it becomes x cube over 6 minus x square over 2 plus 1 का इंटीग्रल, that is x. This is the integral that you get. Now input the limits from 0 to 4. Let's input 4 first of all, and that gives us 4 cube over 6 minus 4 squared over 2 plus 4. Subtract from that the case when you input 0. Up again, हर term में x आ रहा है, तो वो सारे तो 0 हो जाएंगे, and this is just going to be 0. You evaluate this and see what that turns out to be. 64 over 6 minus 16 over 2 plus 4, and that's giving me 20 over 3. This is the other area that I'm getting. Okay, इन दोनों का difference find कर लें, देखें आपके पास क्या आता है। A region between the curves, let's say that's the required area, that is equal to 44 over 3 minus 20 over 3. That's 24 over 3, which is 8, and that is what you were looking for. Okay, that was pretty standard, easy 5 marks. If you've done enough practice on integration, this was not that difficult.
Let's look at part B of this now. It says the acute angle between the two tangents at B is denoted by alpha degrees, and the scales on the axes are the same. Okay, what does that mean? Okay, all right. So scales on the axes are the same. So what that means is कि ये ग्राफ आपका डिस्टॉर्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है. सो आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. ओके, ये आपको अल्फा फाइंड करना है. अल्फा इज द एंगल बिटवीन दोस टू टेंजेंट्स, राइट? यस दानियाल, वी यूज दैट tan थीटा वाला फॉर्मूला हियर. आप दोनों टेंजेंट्स के ग्रेडियंट्स निकालोगे. वो कैसे निकालेंगे? आपको कर्व के ग्रेडियंट चाहिए होंगे उस पॉइंट बी के ऊपर. वी ऑलरेडी नो, वी डोंट हैव द डेरिवेटिव्स. आपको दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको यूज करके आप उन कर्व्स के टेंजेंट्स के ग्रेडियंट्स निकाल सकते हो. ओके, लेट्स डू दैट. सो वी हैव वन कर्व व्हिच इज y equals 2x raised to the power of 1 over 2. And the other is half x square minus x plus 1. ठीक है, ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं. पॉइंट बी के ऊपर जो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं उनके दरमियान में एंगल क्या बन रहा है? वो अल्फा बन रहा है. तो हमें पहले टेंजेंट्स का ग्रेडियंट निकालना है. लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव फॉर बोथ ऑफ दीज फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 into 1 over 2, that's going to be 1 into x raised to power minus 1 over 2. 1 का derivative 0 होता है, so this is just x raised to power minus 1 over 2, or we can say 1 over x power 1 over 2. This is the first derivative. Let's find the other one. Half x square का derivative, again 2 multiply होगा, 2 over 2 is going to be 1 as well. x की power में से 1 minus किया, that's just 1 minus 1, and this turns out to be x minus 1. ठीक है, इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे? b का जो x कोऑर्डिनेट है वो इनपुट कर दें. b का x कोऑर्डिनेट क्या है? 4. लेट्स इनपुट दैट हियर. सो वी पुट x equals 4 in both of these derivatives. पहले वाले में आपको क्या मिलता है? 1 over 4 raised to power 1 over 2. This is 1 over 2. And the other one gives us 4 minus 1, which is equal to 3. These are the gradients of the two tangents. These two values are gradients of the tangents. ठीक है, अब उन tangents के दरमियान में आपने एंगल निकालना है. उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लें. tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. ओके, यहाँ पे थीटा की जगह उसने अल्फा रखा हुआ है, अब उसको अल्फा रखा है. राइट, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. किसी भी एक एंगल को आप किसी भी एक ग्रेडियंट को आप m1 कह दें, दूसरे को m2 कह दें, और आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, उसने कहा हुआ है एक्यूट एंगल चाहिए, तो अगर आपका आंसर ऑब्ट्यूज आ जाता है, आपने 180 में से माइनस कर देना है, आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो फॉर इन दिस केस फॉर इंस्टेंस आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं 3 minus 1 over 2 divided by 1 minus, in fact 1 plus into 1 plus 3 into 1 over 2. That is equal to tan of alpha, and that is going to give you the value for alpha. इस केस में अगर आप ये उल्टा करते हैं ना, 1 over 2 minus 3 करते हैं, वो क्योंकि नेगेटिव आ जाता है ऊपर, tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फर्स्ट में नेगेटिव नहीं होता, तो आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है उस केस के अंदर. तो अगर आप वो करते हैं तो फाइनल आंसर में आप क्या करते हैं? एंड पे 180 में से माइनस कर देते हैं. ठीक है, लेट्स सी व्हाट tan alpha here turns out to be. We have 3 minus 1 over 2, that's 5 over 2. 5 over 2 divided by 1 plus 3 over 2. Okay. Tan alpha equals 1 आ रहा है यहाँ से, तो the value of alpha therefore turns out to be 45 degrees और pi over 4. अब ये डिपेंड करेगा उसने किस कौन सा एंगल का यूनिट यूज किया हुआ है. अल्फा डिग्रीज लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? Alpha equals 45 degrees, and that's what we were looking for. ठीक है, all right, let's move on to question number 11 now.
Now, before we start this, just a reminder, you can find a lot of other helpful content in the description below as well, especially at this time. Quick revision videos are extremely helpful. If you look at the description, उसमें आपको एक playlist मिलेगी जिसमें paper 1 की एक तो checklist है that makes sure that you have covered all the important concepts that you need to know about for exam in the morning. And also you'll find quick revision videos on all the paper 1 topics. So if you want any particular topic refreshed, you can have a look at those videos as well. Okay, किसी और past paper से कोई question आपको तंग कर रहा है तो उसके लिए yearly past paper भी सारे solved हैं. You can have a look at them if needed. And make sure to leave a like on the stream. It helps find more people. It helps more people find this video in their YouTube search. Engagement अगर बढ़ती है तो उससे फिर वो search में आराम से मिल जाती है. Okay. All right. So let's start with this question number 11. The diagram shows the circle with equation x square plus y square equals 20. We have the circle. इसका center क्या होएगा? Origin, right? Because standard form क्या होती है? X minus a whole square plus y minus b whole square equals r square. तो इसका center आपके पास origin बन रहा है. Tangents touching the circle at points B and C pass through the point A. By letting the equation of a tangent be mx plus 10, find the two possible values of m. Okay, so we have the equation of a circle that is x square plus y square equals 20, and the equation of a tangent is, let's say, y equals mx plus 10. We need to find the two possible values of m. Now, how do you do that? Now, one thing that you might think about is, can you simultaneously solve कर लें? अब simultaneously आप पूरा solve कर नहीं सकते because you have three unknowns, x, y, and m, and you have only two equations. तो आपको इसकी x और y की values इतना directly तो नहीं मिल सकती हैं. You can use another idea. The tangent only touches the circle at one point, right? तो आप अगर इस tangent की equation को इस circle की equation के अंदर input करते हैं, आपके पास एक quadratic equation आती है. Now, remember, when a quadratic equation has only one solution, the discriminant is supposed to be equal to 0. So that is what you are going to be using here. What you do is you say, let's input y equals mx plus 10 here. And now this is a quadratic equation. Since this line is a tangent to the circle, the discriminant should be equal to 0. All right, now let's simplify this and see what that gives us. X squared plus mx ka whole square, that's m squared x squared plus 2 into 10 into mx, that's 20 mx plus 10 squared, that's 100 equals 20. Let's take everything to one side, and that gives us x square की दो terms आ रही हैं आपके पास. इनमें से हम क्या करेंगे? 1 plus m square common ले लें. So the coefficient of x square therefore is 1 plus m square. X term is only 1, that's 20m. Then you have the constant 100 minus 20, that is 80. Now b square minus 4ac has to be equal to 0, right? Input values in this. B is 20m whole squared minus 4 into a, which is 1 plus m squared into c, which is 80, that equals 0. Now, what do we get from this? 20 squared is 400, so that's 400m squared minus 4 minus 4. No, sorry, there's an 80 there as well. 4 into 80, what would that be? That is 320 into 1 plus m squared equals 0. And that gives us 400m squared minus 320 minus 320m squared equals 0. 400 minus 320, that's 80m squared minus 320. We can divide by 80, and that leaves us with m square minus 4. M square equals 4, and that gives us m equal to plus minus 2. These are the two values of m that we're getting. Okay, m could either be plus 2 or it could be minus 2. Okay, that was the first part. Now let's look at the next part.
It says find the coordinates of B and C. Now, what are B and C? B and C are the points where the tangent meets the circle, where the tangents meet the circle. All right, these are the points that we are looking for. Now, if you think about it, we might not need to find both of them separately, because agar hum ek bhi find kar lein, it's a symmetrical shape, right? So if you know the coordinates of B or C of any one of them, let's say हमें C पता है, तो C का जो y कोऑर्डिनेट है वही B का y कोऑर्डिनेट होएगा, राइट? और जो C का x कोऑर्डिनेट है, B का x कोऑर्डिनेट भी उसी का नेगेटिव होएगा, राइट? तो हम कोई भी एक फाइंड कर लेते हैं और दूसरा तो हमें उससे मिल जाएगा फिर डायरेक्टली, ठीक है? Now how do you find any one of them? We have the equation of the circle, that's x square plus y square. इनफैक्ट आप ये डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म जो आपने ऑलरेडी इक्वेट करके ये बना लिया हुआ है, इसके अंदर आप m की वैल्यू डाल दें, उससे भी कर सकते हैं. But if that confuses you, you can just start over again. You can say x square plus y square equals 20. This is the equation of the circle. Equation of the line was y equals mx plus 20 plus 10. Sorry. आपको क्या करना है? टेंजेंट कोई भी एक टेंजेंट ले लें उनमें से. एक टेंजेंट में m की वैल्यू 2 थी, दूसरे में -2 थी. आप 2 या -2 में से कोई भी इनपुट कर दें. लेट्स से मैं 2 इनपुट कर देता हूं इसके अंदर. Just solve these two simultaneously. Put this in the first equation, and that's going to give me x squared plus 2x plus 10 whole squared equals 20. Let's solve this and see what that gives me. 2x squared plus 2x, x squared plus 2x ka whole square, that is 4x squared plus 2 into 2x into 10, that's 40x, plus 100 minus 20 equals 0. And this gives us 5x squared plus 40x plus 80 equals 0. Can we simplify this? 5 से divide कर दें. This is going to give us x squared plus 8x plus 80 over 5 is 16. This equals 0. Okay, we can factorize this. This is going to become x squared plus 4x plus 4x plus 16 equals 0. And that gives us two factors. Both are the same. X plus 4 into x plus 4. In fact, वो perfect square form थी. आप इसको directly x plus 4 whole squared भी लिख सकते थे. And this is giving me x equals -4. If x equals -4, we can input this back in this equation to find the corresponding value for y. या फिर in fact linear में input करें, that's better. That's going to be simpler. इसको उसमें जाके input कर दें. Let's see what the corresponding value of y turns out to be. So it's 2 into -4 plus 10, and y is equal to 2. So one of the points that we're getting therefore is -4 and 2. This is one point. x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. -4 2, ये कौन सा पॉइंट होना चाहिए? लेफ्ट वाला b पॉइंट है. ठीक है, एक पॉइंट आ गया. What about the other point now? उसका y coordinate तो same होना चाहिए. They are at the same level, right? And the x coordinate is just going to be the positive of this. So अगर x coordinate इसका -4 था, that is supposed to be +4. So c के coordinates हम लिख सकते हैं. हम कह सकते हैं c के coordinates are supposed to be 4 and 2 therefore. ठीक है, ये हमारे पास b और c के coordinates आ गए. And now finally we have this given that the point D is where the circle crosses the positive x-axis. Point D is where the circle crosses. Yeah, okay, so you can see that here. This is the point D. It's the x-intercept of the circle on the positive side. Find the angle BDC in degrees. Okay, BDC. This is the angle that we're looking for. This angle. Okay, now what do we know on this diagram? We know the coordinates of B, they are -4 and 2. Coordinates of C, they are 4 and 2. So what we know is one length of this triangle. BC length पता है हमें, right? -4 और right side पे +4, तो total length कितनी हो जाएगी? ये 8 units हो जाएगी. So we know one length in this triangle, and the triangle BCD, right?
डिग्रीज में फाइंड करना, अच्छा ठीक है। अब ये पॉइंट डी फाइंड कर सकते हैं हम। पॉइंट डी कैसे आएगा? y की वैल्यू 0 इनपुट कर दें सर्कल के इक्वेशन में। So let's do that. First of all, x square plus y square equals 20. Circle का हमें x intercept निकालना है. We put y equal to 0. When we do that, we get x square equals 20. Whenever you take square root, remember we have plus minus. तो इसमें हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 आएगा, लेकिन हमें सिर्फ राइट साइड वाली वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव साइड वाली वैल्यू। तो d का x कोऑर्डिनेट पर क्या हो जाएगा? डी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास? डी पॉइंट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 20 एंड 0। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? इट शुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 and this point is square root of 2 and 0. All right, so we have this point as well. Now we can think of an easy way of figuring out this angle somehow. एक तो तरीका है कि आप तीनों लेंथ फाइंड कर लें और फिर कोसाइन रूल यूज कर लें. That is possible. But let's see if we can figure out using something quicker. Cosine rule के बगैर अगर हम कर सकेंगे इसी तरह से, do we have any angles here? CB length is given, and if we break this triangle down इस तरह से, that is also not going to be helpful. Okay, I think cosine rule use कर लेते हैं. That's probably going to be the simplest we can think of here. Yeah, let's do that. So I can't think of a shorter way at this point. So let's just use cosine rule. Cosine rule use कर लेते हैं. उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें लेंथ पता है, BC की लेंथ पता है. इनफैक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. The point B is -4 and 2 and point C is 4 and 2. These are the other points that you have. Let's find the distances. Let's find the distance. BC तो हमें पता है already. BC distance is 3 units. Okay, let's find BD for instance. ये देख लेते हैं क्या आता है. Square root of 2 square root of 20 minus -4, that becomes +4 whole squared plus 0 minus 2 whole squared. ठीक है, ये BD की लेंथ आ जाएगी आपके पास इससे. Let's see what that turns out to be. Square root of 20 plus 4 squared plus 4 and square root of that. That's giving me 8.705. That's BD. Now you can find CD as well. That's going to be square root of 20 minus 4 whole squared plus 0 minus 2 whole squared. Let's see what this turns out to be. Square root of 20 minus 4 squared plus 4 square root of that, and that is giving me 2.055. Okay, so I have the lengths BD and CD. तीनों lengths आ गए आपके पास. We know BC is 2, so we have this length, we have this length, and we have this length. हमें angle कौन सा चाहिए? हमें angle चाहिए D के ऊपर. तो D के opposite side कौन सी है? ये 8 वाली. So keep that in mind कि आपको कौन सी साइड दूसरी साइड पे रखनी है. So cosine rule वाला formula आप use कर लें, कोई भी form उसके use कर लें. If I use this form, it looks like this: b square plus c square minus, so cos of a is b square plus c square minus a square divided by 2bc. This is one form of the cosine rule. इसमें values input कर दें. Cos आपको cos चाहिए किस point के ऊपर? Angle चाहिए आपको D के ऊपर इस केस के अंदर. तो D के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? 8, राइट. तो इसमें जब इनपुट करेंगे इसका हम थीटा ही लिख लेते हैं टू नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स. एंगल की ऑपोजिट वाली साइड यहाँ पे एक ही जगह पर आ रही होगी. जस्ट कीप दैट इन माइंड. ओके, अच्छा. सो बाकी दोनों लेंथ्स क्या है? 8.705 squared plus 2.055 squared. Subtract from that 8 squared divided by 2 into 8.705 into
2.055. ये पूरा evaluate कर लें, इसका cos inverse निकाल लें. That's going to give you the value of theta in degrees. Let's see what this turns out to be. 8.705 whole squared plus 2.055 squared minus 64 divided by 2 and 8.705 and 2.055. Cos inverse of that is giving me 63.44. 63.44 degrees, and that is the angle that we were looking for. उसने कोई यहाँ पे accuracy का नहीं कुछ कहा हुआ, so we can leave it as it is. This is our final answer here. Okay, I hope that was helpful. That's it for today. I wish you all the best for your exam tomorrow. If you have any questions, you can let me know. We could discuss them for the next 5 to 10 minutes maybe. Just a reminder, you have a lot of other helpful content in the description below. At this point, quick revision videos should be extremely helpful. Have a look at that if you haven't already. And that's it. So I wish you all the best. Hopefully आपके exams inshallah सबके अच्छे होंगे. And then I'll see you for another stream for M1. That's going to be tomorrow. Tomorrow I'm going to be solving 2 M1 papers inshallah, or at least one from October, November 2022. ठीक है, बाकी सारे March 21 से onward solve हुए हैं. कल हम इंशाल्लाह October, November 2022 के 2 M1 के papers solve कर रहे होंगे. ठीक है. How many decimal places do we have to leave our answers in? You can decimal places की बात नहीं होती है. It's about significant figures. Okay, significant figures उसने लिखा होता है 3 significant figures पेपर के स्टार्ट में, लेकिन आपको करना क्या होता है, at least 3 significant figures रखने होते हैं. ठीक है, 3 से ज्यादा लिख लें, that's perfectly okay. You can write 4, 5, however many you want. ज्यादा लिख दें, that's better. Working आपकी minimum 4 significant, 4 से ज्यादा हो जाए, that's okay. और final answer minimum 3 significant figures, 3 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता. कम लिखेंगे मार्क्स कट जाएंगे. That's the general rule. अगर उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ कहा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर उसने कहा हुआ है अगर इतने डेसिमल प्लेसेस चाहिए या इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो आपको वो एज इट इज फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल, इफ दे से दे वांट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन यू हैव टू राइट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आप 1 लिखेंगे उस पर भी मार्क कटेगा, आप 3 लिखेंगे उस पर भी मार्क कटेगा. तो क्वेश्चन के अंदर अगर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यू हैव टू फॉलो दैट टू द डॉट, एग्जैक्टली एज इट इज. खिज़र नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो. डेरिवेटिव को फिर यस, अगर तो वो क्वाड्रेटिक है आप उसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करके देखते हो. अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर आपको वैसे कुछ और देखना होता है, कुछ चीज कॉमन लेके आपको फिगर आउट करना होता है, इफ इट्स ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, राइट. अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है आपका डेरिवेटिव, तो फिर उसमें हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, यस, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो उसका मिनिमम पॉइंट क्या है या मैक्सिमम पॉइंट क्या है उस डेरिवेटिव का, उसके लोएस्ट, उसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं. If you want that in detail, paper 1 के नीचे playlist आप देखेंगे, उसमें आपको increasing decreasing functions की एक वीडियो मिल जाएगी. You can have a look at that at 2x speed. That should be helpful. Okay, anything else? क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर में करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे आ जाए x + 2 होल स्क्वायर्ड -5 लेट्स से, ठीक है. अब ये कौन सी कर्व है? दिस इज अ यू शेप्ड कर्व, राइट. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, इट्स गोइंग टू बी अ यू शेप्ड कर्व. और इस यू शेप्ड कर्व का मिनिमम पॉइंट कहां पर आ रहा है? लेट्स से दिस इज द डेरिवेटिव, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव है, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं. अगर ये डेरिवेटिव को हम प्लॉट करते हैं, डेरिवेटिव का अगर हम ग्राफ बनाते हैं लेट्स से, तो वो इस तरह का लगता है कुछ, राइट. अब इसमें टर्निंग पॉइंट क्या होता? -2 एंड -5. अब ये टर्निंग पॉइंट जो इस डेरिवेटिव का आ रहा है, दैट इज बिलो द एक्स एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं. तो दिस इज नाइदर.
इनफैक्ट इसमें ना ग्राफ थोड़ा कंफ्यूज करता है, वो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा ये ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है, ये डेरिवेटिव का ग्राफ कहाँ से आ गया. सो लेट्स एक्चुअली नॉट डू दैट, लेट्स डू इट डायरेक्टली. इसके बगैर करते हैं, इसके बगैर देख लें. जस्ट लुक एट दिस फंक्शन, ठीक है, दैट माइट बी इजियर फॉर यू टू थिंक अबाउट. आप देखें जो ये वाला पार्ट है, इट्स अ स्क्वायर. ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, या पॉजिटिव होगा, जीरो होगा. इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट. और फिर जो बाहर वाला पार्ट है, अब ये नेगेटिव आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? -5 से ऊपर कुछ होगा ना, -5 या उससे ऊपर की वैल्यू होगी. इसका मतलब ये होगा डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज डेरिवेटिव कुड बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव हियर. ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकती हैं. सो इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. You could have another possibility. अगर इसके अलावा आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता, let's say you had x plus 2 whole squared. यहाँ पे हमारे पास +5 होता, let's say. ठीक है, what about this now? This is a perfect square. Again, this is always greater than or equal to 0. What about this? This is 5. 5 is a positive number. So something positive plus 5, this whole thing is always positive. तो ये increasing function हो जाएगा, because derivative आपका positive आ रहा है हमेशा, no matter what the value of x is. ये expression हमेशा positive आएगी, इसमें जो मर्जी x की value input करें आपको negative आ ही नहीं सकता. Why? This is the logic for that. Square वाला part 0 से बड़ा होएगा या 0 होएगा, और ये +5 करें तो हमेशा positive होएगा. And similarly, you could have something like this. You could have a minus here and maybe a minus outside here. In this case, you can say, acha, this part is always positive or greater than or equal to 0, right? 0 or positive. लेकिन इसके बाहर एक माइनस लगा हुआ है, तो वो माइनस क्या करेगा, अंदर वाले पार्ट को हमेशा नेगेटिव कर देगा. So this thing always becomes negative. नेगेटिव नंबर में आप एक और नेगेटिव नंबर यहाँ पे डाल रहे हो, this is also negative. तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा. So that means the derivative is less than 0 and it's a decreasing function. Right, so quadratic functions में these are the 3 different cases that you could have. Bracket के अंदर negative sign होने से कुछ नहीं होता. Bracket के अंदर negative और positive, that does not make any difference because you have a square outside. अंदर negative से कुछ नहीं होता, बाहर negative से होता है. Right, because अंदर जो मर्जी होगा result तो आपका positive ही आना है. Okay, अंदर negative positive से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर वाले साइन से फर्क पड़ता. ठीक है, I hope that's helpful. If there are any problems, any other issues, let me know. Any other questions, anyone? Quickly, I have a class in the morning as well, so I need to end this. When fx has no solutions, as in what to do? What do you mean by what to do? Is it, are you talking about increasing or decreasing functions? उसी की बात करें, या वैसे in general fx has no solutions? Discriminant उसमें negative होता है, ये होता है quadratic functions में. I don't understand your question. In general, well, if function has no solutions, then it has no solutions. You don't get anything from that. If they're talking about a quadratic function and that has no solutions, that means that discriminant is less than 0. आप वो use कर सकते हो. In general, if f has no solutions, that just means कि उसका कोई x intercept नहीं है. That's all that it means.
All right. Okay. So all the best for your exam then in the morning. I'll see you again with some more M1 papers. You can find a lot of helpful content in the description below as well. Try to explore that, especially the quick revision videos. And I'll see you again at another time then. Yes, then quadratic में वही होता है, discriminant आप less than 0 कर देते हो. ठीक है. Okay. Allah Hafiz everyone. All the best. Have a good sleep. Math exam के लिए सोना बहुत जरूरी होता है. Have at least 6 hours of sleep, and that will help you in the exam. आप थोड़ा fresh रहेंगे. ठीक है. Thinking थोड़ा सा thinking थोड़ी सी आसान हो जाती है उससे. Careless errors भी कम हो जाते हैं. So that's really important. Don't keep studying the whole night. That's going to be counterproductive. Okay. All right. Allah Hafiz everyone.